Welcome back to BISCOM Academy. Till now, we have completed the management subject, including the functions, principle, and levels of management. And today, we are going to start a topic or a subject that is very important, which is known as organizational behavior, or also known as OB. So, what is OB? Organizational behavior is one of the most scoring and interesting subject in streams of commerce, BBA and MBA. So, today we'll talk about an interesting topic just for introduction, that is OB, why it is important, why do we need it, and most importantly, what does it mean? So, what is organizational behavior? Organizational behavior is the behavior of the people inside the organization. Or I can say organizational behavior is how the people or the employees behave inside the organization. It also means how a manager behaves with the employees, customer, with the seniors, superiors, how they treat the customer, the way they talk, the way they indulge with people. So, organizational behavior is a behavior or how the behave with the people inside the organization. Okay? So, it focuses on understandings. There are some understandings that we have to understand, which are how employees think, how employees think. We have to understand the employees. It is very important. They're thinking, they're talking, they're doing. If we don't know what is going inside the mind of the employee, it is hard to understand them and it is hard to make them work for us. Then, how they feel. How they feel. How they feel. Now, if I don't know what is going on inside the mind of the employee, अगर मैं उनको समझ नहीं सकती उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो how will I understand कि उनके मन में क्या है? If an employee is upset, मैं उसको जाके कुछ उल्टा बोल दूं, तो obviously that is my fault because I didn't know what was going on his mind and I just went and spoke in a rude manner. तो obviously वो मेरे पर snap करेगा. So I have to understand how my employees work and how they feel. Then, how they behave at work. How they behave at work. Their behavior in the work. मतलब वो अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ बिहेव कैसे कर रहे हैं? Are they rude with their juniors? Are they doing some petting? जो अंदर हम लोग चलते जैसे हम चापलूसी बोलते हैं सीनियर्स के साथ ताकि दूसरा आगे ना बढ़ सके. क्या वो दूसरों को गलत तरीके से बात कर रहे हैं, सबको नीचा दिखा के बात कर रहे हैं? We have to go through all of this thing. Then one more question is, and how their behavior affects the organization. How their behavior affects the organization. Obviously, अगर वो rude रहते हैं, if inside the organization, if your employees are rude, inside the organization they don't know how to talk, obviously they don't know how to talk with the people who are outside. They are our employees, they are the people who will invest, they are the government, and they are your competitors also. Right? So, in short, if I say simple words, OB studies people at work. OB का काम कुछ नहीं है. In OB, it helps us to study and understand the people who are working under us. ठीक है? Now, what is the nature of organizational behavior? Now, nature. It is the study
of human behavior in an organization. Obviously ना, I said inside the organization. तो हमारे यहाँ पे जितने लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज जिन्हें हम बोलते हैं, या हमारे सुपीरियर्स, हमारे जूनियर्स, हमारे कलीग्स, this OB helps us to study what the human behavior, how they behave, how they talk, how they think, how they feel, everything. ये स्टडी करता है, ये ऑब्जर्विंग करने में हेल्प करता है. इफ आई से इट हेल्प्स यू टू ऑब्जर्व द पीपल एंड द सिनेरियो एंड द एनवायरमेंट दैट इज गोइंग ऑन. ठीक है. देन इट इज ऑल्सो गोल ओरिएंटेड. इट इज ऑल्सो गोल ओरिएंटेड. Now, what do you mean by goal-oriented? Goal-oriented मतलब if I know my people, if I know my employees, तो obviously मैं उनको help out कर सकती हूँ. कुछ issues है, I can sort it out with them. उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, I can sort it out with them. उनको सिखाना है, help कर सकती हूँ. उनका behavior खराब है, I can give them some time for them to think, या फिर हम counseling करा सकते हैं. तो क्या होगा, हमारे organization की retainment में भी help आएगा and हमारा goal achieving में भी काम आता है. Clear? Then it is interdisciplinary. Remember this. It is interdisciplinary. Now, what does it mean? It has observed, it has studied, it has collected data from different sets of areas, data or knowledge, if I say data, psychology, sociology, economics and management. Psychology, sociology, eco and मैनेजमेंट. इसका ओबी का नॉलेज कहाँ से आता है? साइकोलॉजी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड द पीपल. सोशियोलॉजी में भी हमको लोगों का थिंकिंग हेल्प करता है समझने के लिए. इको द एनवायरमेंट, द मार्केट, राइट. एंड मैनेजमेंट क्या? हाउ टू मैनेज द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन और गेट देम टू डू द थिंग्स दैट वी वांट टू डू, राइट. सो ये एक एरिया का नहीं है, ये इन सब एरिया से कुछ ना कुछ लेके आया है. दैट इज द रीजन हम इसको यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ समझने के लिए. तो भी हाथ. नाउ आई सेड वी हैव टू नो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, right? First and foremost point, it helps us to understand the employees. We have to understand the people whom we are working with. We have to know what they are talking about, what they think, how they work, and how are they working in an organization. So we have to understand the employees. The employees are humans, तो हमको human behavior समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है? Next is to improve communication. ऑब्वियसली अगर मैं अपने लोगों को समझती हूँ, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, तो मैं उनके कम्युनिकेट इजीली कर पाऊंगी. इफ आई वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड समथिंग एंड इफ आई नो हाउ दे थिंक, हाउ माय एम्प्लॉयज थिंक, इजीली जाके मैं ये बोल सकती हूँ कि आई एम चेंजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज विल चेंज फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, कीपिंग योर इंटरेस्ट एंड कीपिंग यू इन माइंड. तो यहाँ क्या होगा? रूड भी नहीं लगेगा, एम्प्लॉयज आपका हेल्प भी करेंगे एंड दे विल स्टैंड विथ यू थ्रू थिक एंड थिन, राइट. देन हमारा आता है टू इंक्रीज मोटिवेशन. जब हम अपने लोगों को समझ सकते हैं, व्हेन वी नो आवर एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं,
राइट? क्योंकि मुझे पता है मेरा एम्प्लॉय कब अपसेट है, कब मेरा एम्प्लॉय डाउन जा सकता है, व्हेन ही और शी इज सैड, कब हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं. If मेरा communication अच्छा है तो those employee will come to me and they will ask me about and they will tell me about their issues, and being the head or being the colleague, they being the superior, I will be there to help them. और क्या होगा इससे, they will be motivated to work for you and work in a better and hard way. हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, हार्ड वर्क करेंगे तो उनके खुद के फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, राइट? टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, obviously if I understand my people, if they understand that अगर उनके बीच में भी लड़ाई नहीं है, अगर एक दूसरे को हम समझ पाते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा कंफ्लिक्ट कभी भी अराइज नहीं होगा. इफ वन एम्प्लॉय इज एंग्री, वन एम्प्लॉय इज काम, उसको पता है कि इसको क्या चीज वजह से ट्रिगर होता है, तो दैट पर्सन विल नॉट गो एंड ट्रिगर दैट एम्प्लॉय हु हैज अ शॉर्ट टेम्पर. हु हैज शॉर्ट टेम्पर, अगर हम उसको नहीं अगर ट्रिगर करेंगे तो दैट विल बी अ गुड थिंग. यहाँ पे लड़ाई नहीं होगा और दूसरे आके बाहर से कंपटीटर्स आके हमारे बीच में लड़ाई नहीं करा पाएंगे. क्लियर? नाउ इफ आई से ओबी इन रियल लाइफ, ओबी इन रियल लाइफ मतलब क्या होता है? व्हेन अ मैनेजर अंडरस्टैंड्स, व्हेन अ मैनेजर अंडरस्टैंड्स, व्हेन डज अ मैनेजर अंडरस्टैंड? सिंपल है ना, I told you मैनेजर को समझना जरूरी है. तो when does he or she understand? When he knows why his employee is angry, why his employee, why his employees are unhappy, right? Then why they resist change, why they resist change, why they resist change, why others work better than some. ये when does a manager understand? When that manager is using organizational behavior OB. जब उसको पता है कि मेरे एम्प्लॉयज में क्या है, क्यों है, कैसे करना है, then that person will go and find out these issues. If he can understand these issues, then he or she is using OB or organizational behavior. Right? So, if you found this class helpful, subscribe to BISCOM Academy to complete BCom, BBA and MBA syllabus in simple language. Until then, goodbye and good night.